Hello everyone, today we're going to start the new chapter, the United Nations. Lesson 8, the United Nations. Chapter outline, we're going to cover need for the United Nations and UN objectives. Get connect. In the first half of the 20th century, there have been two major wars. The First World War in 1914, Second World War in 1930. These wars को हम world wars कहते थे because they involved बहुत सारी countries इसके अंदर involved थी. Observe the logo of United Nations. It has a map है of the world surrounded by olive branches. Find out what the olive branches symbol. Now need for the United Nations. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूनाइटेड स्टेट्स ने ड्रॉप करा एटम बम ऑन जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी. इससे बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ, लैक ऑफ पीपल की लाइफ चली गई और बहुत इंजर्ड हुए. पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड ने ह्यूमन रेस को फेल किया हाउ टू सर्वाइव. तो देयर शुड बी नो वर्ल्ड वॉर्स इन फ्यूचर में नहीं होने चाहिए. इट वॉज ऑल्सो फेल कि जितना अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड हुआ डिस्ट्रक्टिव आर्म्स पर, वेपन्स पर, वो बेटर हम यूज कर ले तो ब्रिंग हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड. हम उन लड़ाई झगड़ों में जो पैसा हमने वेपन्स और सारे पैटर्न बम्स में लगाया, बेटर टू स्पेंड दैट मनी ऑन हैप्पीनेस ऑफ द पीपल लिविंग इन द वर्ल्ड. और अप्रैल 1945 में कुछ पावरफुल कंट्रीज मेट दिल्ली सैन फ्रांसिस्को इन यूएसए. अब थ्री जो थे वर्ल्ड लीडर्स, यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल एंड द सोवियत लीडर स्टालिन. उन्होंने फॉर्मेशन ऑफ एक नया वर्ल्ड बॉडी डिस्कस किया in place of unsuccessful League of Nations. Thus, 24 October 1945 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज यूएनओ को डिस्कवर किया गया, सेटअप किया गया ताकि वर्ल्ड को एक बेटर और सेफर प्लेस बना सके सबके लिए. लेटर को शॉर्टन कर दिया गया, वो यूएन बुलाने लगे यूनाइटेड नेशन. टर्म यूनाइटेड नेशन को गिवन बाय किसने दिया? वाज गिवन बाय फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, देन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए थे उस टाइम पे. 24 अक्टूबर को हम हर साल यूएन डे मनाया जाता है. मेंबरशिप जो है यूएन की वो ओपन है टू ऑल पीस लविंग कंट्रीज विलिंग टू एक्सेप्ट इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स. यूएन हैज बीन सक्सेसफुल है इन इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंटिंग अनदर वर्ल्ड वॉर. यूएन का सबसे विजिबल पब्लिक फिगर है सेक्रेटरी जनरल. प्रेजेंट में इट हैज 193 मेंबर्स हैं उसके. यूएन हैज अपना फ्लैग है उसका, ब्लू विद यूएन एम्बलम ऑन इट, वाइट. अब एम्बलम कंसिस्ट है दो ऑलिव ब्रांचेस से, सिंबल ऑफ पीस एंड एम्ब्रेसिंग द ग्लोब. फैक्ट टू नो, चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वाज साइन किया गया 26 जून सैन फ्रांसिस्को एट द कंक्लूजन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन 24 अक्टूबर 1940. स्टैच्यू ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक इंटीग्रल पार्ट है चार्टर का. यूएन ऑब्जेक्टिव्स, मेन फंक्शन जो है यूएन का है टू ट्राई एंड सेटल डिस्प्यूट्स को सेटल करना मेंबर नेशंस के बीच में थ्रू डिस्कशन एंड पीसफुल मेथड. द चार्टर ऑफ द यूएन है उसके कॉन्स्टिट्यूशन की तरह, क्या आउटलाइन करता है ऑब्जेक्टिविटीज ऑफ द यूएन इन डिटेल. कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स भी हैं उसके. टू प्रिवेंट फ्यूचर में आप वॉर को खत्म करने के लिए बनाया गया. उनका मेन एम ये था कि वॉर शांति बनी रहे. एनकरेज करना एक स्पिरिट कॉपरेशन का नेशंस के अमंग, सोशल कल्चरल ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम को सॉल्व करना, रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड सपोर्ट फ्रीडम फॉर ऑल पीपल. क्या प्रिंसिपल से जितने भी मेंबर्स थे उनको अपने डिस्प्यूट को पीसफुल तरीके से सेटल करना है. जितने भी मेंबर कंट्रीज है सॉवरेन है और इक्वल है और सबको रिस्पेक्ट करने में सबके राइट्स ऑफ अदर नेशन. दे शुड रेफ्रेन फ्रॉम एनी थ्रेट और यूज, किसी तरह से कोई धमकी थ्रेट किसी को नहीं देना है. दे मस्ट सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन, हर तरीके से सपोर्ट करना. तो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए यूएन ने एक डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स को इशू किया. ह्यूमन बीइंग को डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहा जाता है. इट वॉज अडॉप्टेड 10 दिसंबर 1948 में अडॉप्ट हुआ. 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है द ह्यूमन राइट्स डे एवरी ईयर. कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स मेंशन हैं डिक्लेरेशन में. राइट टू लिव एज फ्री सिटीजन ऑफ अ कंट्री, ऑल पीपल शुड बी इक्वल बिफोर लॉ. राइट टू एजुकेशन, एवरी पर्सन शुड हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच राइटिंग. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, वन शुड हैव राइट टू एम्प्लॉयमेंट. No discrimination based on religion, caste or sex. Freedom to follow the religion of one's own choice. One should have the freedom to travel anywhere. कहीं पर भी ट्रैवल आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है. अपनी चॉइस की चीज़ ले सकते हो, अपने किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, अपने व्यूज दे सकते हो. यूनाइटेड नेशन मेकिंग इट्स बेस्ट एफर्ट करा ताकि वो इन ह्यूमन राइट्स को इम्प्लीमेंट कर सके मेंबर जो बाकी के मेंबर नेशन से मदद से. यूएन ने खाली वॉर ही रोकने की कोशिश नहीं करी बल्कि उस वर्ल्ड को बॉडी बनाया फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन हर फील्ड.
लाइफ के। यूएन क्या चाहता है कि वो अपने इंटरनेशनल कॉपरेशन को बनाए रखे, मेंबर कंट्रीज, बहुत सारे कमेटी, काउंसिल। Let's recap. The two world wars were caused a lot of misery and destruction. United Nations was formed on 24th October 1945. Main aim of UN is to maintain international peace and security. UN has made a list of rights that every human being should have. At present, there are about 193 nations that are the members of UN. Now let's do the precise, dark, and the correct document. The First World War was fought between 1914 to 1918. This organization was established to maintain peace in the World War after the Second World War, United Nations. Headquarters of UN is at New York. Fill in the blanks. The United States dropped atom bombs on Nagasaki and Hiroshima. These are the cities of Japan. The term dash was given by the Franklin D. Roosevelt New Deal. The emblem of the UN consists of two dash embracing the globe, olive branches. UN tries to encourage a spirit of dash amongst nation cooperation. Dash is celebrated as the Human Rights Day, that is December 10th. Right, the T for the True and F for False. The headquarters of the United Nations is in USA. True. The World War was fought in Europe only. False. At present, there are about 150 members nation of the UN. False. The UN flag is of red color with the UN emblem on it white. False. The UK dropped atom bombs on Hiroshima and Nagasaki. So I hope you all have understood this chapter. You can go through it again and stay connected to learn more. Bye bye. Take care.